Friends, I firmly believe we are born with some mission, a purpose in life. Even if life seems like an accident to some, but it is not. But yes, for those who believe this is an accident, they will disappear. And those who believe in purpose will live through their dedicated work, as well as they will get many more chances. They want to be part of this accident. Am I calling it an accident now? No, I just used the word for your attention. I not only see a purpose in life, I investigate further. I want to know what is the purpose of this purpose. And I do get my answers, slowly but surely. Slowly and gently, I've been able to tap into this omnipresent wisdom around us, gently and safely you tap, more precise answer you receive. With the results, your faith in this wisdom around you strengthens, and you start becoming stronger to absorb more wisdom. It is indeed not a child's play, but it is a child's play because remember, you have to move in gently, slowly, almost like a child. So it is a child's play. Your smartness does not function here, unfortunately. You become part of the system and you contemplate on this omnipresent wisdom. But there is a catch. More you learn and you get filled with wisdom, more responsibility sets in. In the beginning it is cumbersome, but gradually it becomes your second nature. Responsibility does not scare you, and you walk into the path of sahaj, tranquility sets in. Now you start enjoying the cumbersome task of becoming part of the system around you. I've been contemplating on writing and sharing my experiences of the system, the feelings, and the wisdom around. Finally, the day has come. Today, April 24th, year was 1982 when I lost my best friend, my grandfather, a simple man who lived a so-called cumbersome life, meaning life with a purpose and understanding the purpose of purpose and performing to the capacity he was created with. A day before he passed, he called me in his room, explained it was his last day, and asked me to remain truthful, transparent, simple, but brave. He could see through. He could project my life, watching me as I grew from a child to an adult. He predicted many tough paths for me ahead, but he silently and gently used to whisper something in my ears. That something was indeed a message from omnipresent wisdom. Don't worry, you must perform, and don't worry about the outcome. Compensations will come in many ways and forms. Amen. Friends, from today I am putting foundation stone of an inspirational ministry. I have named it just simply Sikhi. We will discuss, prepare, and strengthen our faith in simple living and high thinking. I want to thank many of my friends, those who have come forward to assist me with the project, with this ministry. Harbans Meher, a retired army officer, is one of them, and I want to thank him. Let a new era begin at the responsible get-together. As the responsible get-together and unfold the agenda, and let's at least try our voice to be heard today. It may take few months to a year for us to pick up speed, but expect this man to commit rest of my life to this project.
which is embedded in my genes. I could not separate it from me. I didn't even try it. I knew I will fail. Every day of my life will be on this project, regardless of how many hindrances come up. And I get and I don't get any return. I just want to live up to my genetics and be able to perform as per standards spread out by this omnipresent wisdom. Talk to you tomorrow and talk to you every single day now. Remember, this man isn't going to go away from his project. Thank you all. So भाइयों, हिंदी और पंजाबी में मैं कहना चाहूँगा कि आज वो दिन आ गया है जिसका मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। आज का दिन मेरे दादाजी इस दुनिया से चले गए, पर उन्होंने जो कुछ देखा, जो कुछ कहा, वो सच निकला। जीवन सचमुच एक पर्पस है और इस पर्पस को ढूंढना हमारा दूसरा पर्पस है। इसी को खेल, इसी को लीला कहते हैं। बहुत कम्बरसम टास्क है ये, क्योंकि जब आदमी को उसका पर्पस पता लगता है उसके साथ ही उस पर बोझ पड़ना शुरू हो जाता है, यानी उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पेनिट्रेट होनी शुरू हो जाती है। तो ज्यों-ज्यों वो अपने पर्पस को समझता है त्यों-त्यों विजडम सेट होती है और उसके साथ ही एक कम्बरसम टास्क जो है, एक भारी काम जो है उसको सौंपा जाता है और वो उसका पार्ट बनता चला जाता है। जैसा कि मैंने इंग्लिश में कहा कि शुरू में ये कम्बरसम टास्क जो है बड़ा भारी लगता है, ऐसे लगता है जैसे दुख का कारण बनेगा, पर ऐसा होता नहीं है। एक कम्बरसम काम धीरे धीरे एक सेकंड नेचर बन जाता है। एक डिसिप्लिन तरीके से आदमी जीना शुरू कर देता है, जिससे उसे ये कम्बरसम टास्क कम्बरसम लगता ही नहीं है। ये यूं लगता है जैसे रोज का काम हो। आइए, आज मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा दिन है जिसे मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। पिछले साल भी लकीर खींची थी ईवान प्रेस की तरफ बढ़ा जाए और अपने जीवन को संसार को सौंप दिया जाए, पर शायद समय पूरा आया नहीं था। आज समय आ चुका है। आज के बाद यह आदमी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। एक इंस्पिरेशनल मिनिस्ट्री, जिसे मैं सिख मिनिस्ट्री का नाम दूंगा, जस्ट सिंपली सिखी, उसकी नींव पत्थर रखी जा रही है। एंड आपकी कृपा और आपकी दुआ प्रार्थना से दिनों दिन हम अपने पथ की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। हमें एक ऐसा संसार, हमें एक ऐसा वातावरण क्रिएट करना है जिसमें सद्बुद्धि रखने वाले लोग अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को और शार्पन करें और उस जिम्मेवारी को समझते हुए संसार के अंदर सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग का झंडा लहराएं। एंड आई थैंक यू सो मच विद दिस। जिस तरह की मैं इंग्लिश और पंजाबी च कहा, वही लफ्ज़ मैं पंजाबी विच सादे शब्दां विच कहना चाहांगा कि जीवन का एक पर्पस है। उस पर्पस नूं खोजना बहुत ज़रूरी है। उहदे विच थोड़ा समा लगता है, लेकिन वो पर्पस साफ दिखाई दिंदा है। जदों वो पर्पस दिखण लग जाता है, उस तो बाद मनुष्य दी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਤੇ बोझ पाण लग जाती है। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹਨੂੰ पता लगता है सच का, त्यों-त्यों ਉਹ भावुक होके होर जिम्मेवार बनता चला जाता है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी विजडम के थ्रू आती है, जिहड़ी रुकदी नहीं है। उस तो बाद अज तो बाद असी एक ऐसी स्टेज बना रहे हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिहदे विच एक सिख मिनिस्ट्री की मैं नींह रख रहा और जिहदे विच सब तो पहला मैं अपने आप को कमिट कर रहा कि एवरी सिंगल डे वी विल टॉक अबाउट दिस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस विजडम अराउंड अस, एंड लिविंग ए सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट लाइफ एंड क्रिएटिंग ए वर्ल्ड विच कैन सस्टेन व्हाट यू सी आउट देयर। दुनिया ने पूरे 100-125 साल के अंदर ये जो तरक्की तुसी देख रहे हो ये कीती है, और ये विद्युत बिजली के कारण हुई है। बिजली तो मोटर बनी है और मोटर चलन दे नाल घड़ी तो लैके हवाई जहाज तक उस मोटर नाल चलते हैं। और ये 100-125 साल की जिहड़ी तरक्की है,
ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਨਵਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਖੋ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸੋ ਆਓ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ gently slowly we tap into the omnipresent wisdom so we understand the purpose and once we understand the purpose we will become more responsible I can assure you because it has happened to me and ਜਿਉਂ ਭਿੱਜੇ ਕਮਲੀ ਤਿਉਂ ਭਾਰੀ ਹੋਏ we will become more responsible gentle and slowly we will spread the good word out there so we can create more speakers we can create more common sense we can create those who will take responsibility on their shoulders rather than running away this human that we see today which is filled with jealousy anger resentment has no chance of surviving I can write it on a piece of word I can write it on a piece of paper. Take my word for it. This human which is filled with jealousy, vengeance and anger will disappear. नामो निशान नहीं रहेगा इस ह्यूमन का क्योंकि अगला जिहड़ा ह्यूमन आ रहा है वो इन्ना रिस्पॉन्सिबल होएगा कि उन्होंने ये गतिविधियां बिल्कुल भी फब्बणगियां नहीं अच्छे नहीं लगणगियां सो आओ एक नवे समाज की आपां उसारी करिए और इस नवी मिनिस्ट्री विच मैं ही पहला स्टूडेंट होवांगा एंड मैं ही पहला टीचर होवांगा बट आई एक्सपेक्ट एवरीबडी अदर्स टू जॉइन इन and I am expecting a lot of people to come on board with me and talk about common sense and tap into the omnipresent wisdom then wasting time on organized religion, organized structures, rituals, superstitions which is doing nothing but wasting your time and creating a lot of anxiety and fear and let's free our kids ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਆਈ ਵਿਲ ਟਾਕ ਟੂ ਯੂ ਔਨ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ परिस्थितियों तो मैं निकलिया हाँ ਉਹੀ परिस्थितियां ਸਾਡੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗੁੱਥੀਆਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਮੀ ਇਨ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਂਡ I tell you as you will help me you will be helped as well. We will create a samaj, a society which is more and more responsible. And I thank you all for assisting me. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.